Hello, my dear children. I hope you all are doing well. So, in this video, I'll be teaching you chapter number 7. Can you see the pattern? This is very interesting chapter, children. Mathematics का सबसे simple and interesting chapter है. And before we start with the video or before we start with our questions, first we will see key ideas for review. First one is by pattern we play with magic of mathematics. Okay, so what is it? With the help of patterns you can solve the answers. You don't need to solve, you don't need to do certain steps to solve the answers. Here you just need to see the pattern and the solution of mathematics is there like a magic. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. एंड सेकेंड वन इज मैथमेटिक्स कैन बी मेड मोर इंटरेस्टिंग बाय पजल्स गेम्स पैटर्न्स एक्सेट्रा. है ना, तो मैथमेटिक्स आप जब नंबर सॉल्व करते हो सो इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट यहाँ पे आप जब पैटर्न्स देख के सॉल्व करोगे तो इट इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट थिंग. इट इज़ मोर इंटरेस्टिंग. मोर ओवर इट इज़ मोर इंटरेस्टिंग. सो that is it. So nothing more is there, so we'll start with the questions and answers. And before I start with the questions and answers, first I will give you examples outside the textbook so that we can just continue with the textbook questions and answers after that. And okay, so here I'll be giving you few examples to understand how you need to think for solving the pattern questions. Okay, so for example, children, if I am giving you a pattern like for example, I'm giving you a pattern like this. I'm drawing a circle and then a square and then again a circle and then again a square. Okay, this is how I have drawn and I've given you a question that solve this pattern. Okay, this is the question for 4 marks now. So what you will do here, you can see the pattern. Circle के बाद square आया, फिर से circle आया, फिर से square आया. So what will come in these blanks? What will come in these blanks, children? What will come here? The same way. First will come a circle, then a square will come, then again a circle will come and then again a square will come. है ना, ये कैसे पता चला? आपने पैटर्न को देखा, पहले सर्कल है फिर स्क्वायर है, फिर सर्कल है फिर स्क्वायर है. तो आगे के क्वेश्चंस आपने कैसे सॉल्व किए? पैटर्न्स को देख के सॉल्व किए. सो लाइक दैट यू हैव टू सॉल्व दीज पैटर्न चैप्टर्स. अगेन आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल. I'll give you one more example, that is for example, here I have plus, then I have multiplication, then I have minus. Okay, and then again I am writing plus. Okay, and then I've given you 3 blanks and I've told you to solve this answer and let me know. So now which pattern do you see here is plus के बाद multiplication है, multiplication के बाद minus का साइन है, फिर से plus का साइन है. तो आप क्या समझते हो, प्लस के बाद क्या साइन आएगा भी? मल्टीप्लिकेशन का, है ना. प्लस के बाद मल्टीप्लिकेशन, देन माइनस साइन इज देयर. सो हियर sorry, the plus was there. So here if you see, again after plus what sign is there? Multiplication. After multiplication what sign is there? Subtraction. After subtraction what sign is there? Again plus. है ना. So this is how you have to solve the pattern. I'll give you few more examples. This was examples based on 1 questions. Now I'll give you another example. For example, we have a square, 2 squares, and then we have 1 circle. Okay, then again I have 2 squares and then I have 1 circle. So what pattern do you see here? What will be the next pattern, children? Here in the blanks, what will be the next pattern? The pattern will be the 2 squares and then a circle, then again 2 squares, then a circle. है ना. If you see patterns, you have to check कैसा pattern है question में, and then when you understand the pattern, you will be able to solve the answer.
Okay, children. So I think the concept is clear little bit. We'll do the questions and answers so that you will understand it more. Question number one is again in the following figures, draw the next figure. Okay, so I have already drawn it in your workbook. If you see, the last box is empty. So I'll just tell you, help you to understand how the pattern, how the last box was filled. So in the first box you can see there's only one line, one straight line is there. In second box you can see one straight line, one arrow is there. In the third you can see one straight line, one arrow, and then one straight line again. तो आप यहाँ पे पैटर्न क्या देख रहे हो? लाइन एरो, लाइन एरो, लाइन एरो, ये वाला पैटर्न आपको दिख रहा है. सी हियर, लाइन एरो, राइट. यहाँ पे भी देख सकते हो लाइन एरो, लाइन एरो, लाइन. अब आपको देखना है कि पैटर्न कौन सा. आपको ये पैटर्न तो समझ आ गया, एक लाइन ड्रॉ करना है फिर नेक्स्ट एरो बनाना है, एक लाइन ड्रॉ करना है नेक्स्ट एरो बनाना है. बट अभी कितने बनाना है तो वो भी आप देखोगे. यहाँ पे पहला था वन है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे फोर है, यहाँ पे फाइव है, तो यहाँ पे क्या होगा? सिक्स होगा. आप सिक्स लाइन्स बनाओगे और फर्स्ट वाला सिर्फ लाइन रखोगे, लास्ट वाले में एक एरो ड्रॉ कर दोगे, नेक्स्ट फिर से लाइन रखोगे, नेक्स्ट वाले फिर से एरो कर दोगे. Okay, so here you will draw six lines, and you which in turns will be followed by one line, one arrow, one line, one arrow, like that. Okay, in the B part, if you see, you have a plus sign, you have a plus sign and then arrows are there. For example, if you see the diagrams here, don't see this one, just see this diagram. From here you see this box, all the signs are equal. So like how many lines are there? One from top to bottom, and then from north to south, then south to, yes. Okay, so why, if I say about directions you might get confused. Let's leave about the direction part. If you see how many lines are there, one plus sign and one multiplication sign. Okay, I'll just show you here how it is drawn. Okay, if you see, the diagram is like this: one plus sign and then a multiplication. Okay, like this it is drawn. In the first place, in the first diagram in your workbook, if you see this one, if you see on workbook this diagram, with the where I'm pointing the second figure, first it is marked like this. Okay, arrow is like this. In the second diagram the arrow comes here. In your workbook, you just see, open your workbook and just solve this answer. Pause the video, open the workbook, and then see how I'm solving. And in the second, and in the next figure, the arrow comes here. है ना? And in the next figure, the arrow was coming here. Right? So what you have to do next is, you have to draw the diagram like this. In the next box, in the last box, you have to draw a diagram like this. एक square दिया ना आपको? ठीक है, एक square दिया है. तो वहाँ पे आप क्या करोगे? एक क्रॉस करोगे, एक प्लस साइन बनाओगे, एंड देन व्हाट इज द एरो यू विल मेक हियर इज, द डायग्राम you will make here is like this. You will draw like this, and then you'll draw plus here, then a multiplication sign, and then the arrow downwards. Okay, and the arrow you will draw downwards. You understood the diagram, the pattern? So likewise you have to solve. You have to see how it is worked, and then you have to see the pattern and solve the answer. Third one is C. Okay, third one is C. You can see a dot and a arrow. Okay, so dot is keeping on moving. If you see here, dot is on the upward direction. If you see here, dot is towards the right direction. Here the dot is below. Here the dot is again leftward, and again the dot is upward, and now from the upward it will go to the right hand side. Okay, in the right direction. So the diagram you will make is like this: a dot towards the right and an arrow towards upward. And in the D diagram, in the D it is like lions, sorry. I'll help you out to show here. Okay, so you see here a box here. Okay, in your workbook, if you see a box there, and there's one line here in the first box, है ना? And in the second column, in the second diagram you see two lines here, but standing line.
In the first it was straight line, the sleeping line, and here the lines are standing lines. And in the third place you see, the diagrams are, the lines are again sleeping, moving from left to right, 3 lines are there. And in the next diagram you see a pattern that it is standing, but 4 lines are there. 1 2 3 4. If you see in workbook you can just understand. And likewise, so if you see the pattern, you can identify that there is a line which goes from left to right, and then there's a line which is standing line. Okay, ऊपर सीधा लाइन है, फिर आपकी स्ट्रेट लाइन है, सीधा लाइन है एंड स्ट्रेट लाइन, ऐसा पैटर्न आपका बनता है. एंड कितने लाइंस बनाओगे, यहाँ पे 1 लाइन थे, यहाँ पे 2 है, देन नेक्स्ट 3 lines were there, next 4 lines are here, next 5 lines are here, so here it will come 6 lines. Okay, so what you will do is simply a box is already made, you will just draw 6 lines here. 1 2 3 4 5 and 6. Just draw 6 lines and your answer is done. Okay, next question is about a circle and lines. If you see, a simple circle is there, here 1 line is there, then 2, then a circle 3 lines, a circle 4 lines, here a circle 5 lines. Okay, just simply what you have to do here is draw a circle over here, and then you will draw. Okay, and this is the last pattern, and then in the pattern which you need to draw here is you will draw here. Okay, this should come perpendicular. ठीक है, ऐसे यहाँ सेम आना चाहिए. Okay, in the next figure you can see again a dot and a dot, same line, dot is also there, arrows are also there. So in the first figure 1 dot 1 arrow, second figure 1 dot 2 arrows, third figure 1 dot 3 arrow, fourth figure 1 dot 4 arrows, next 1 dot 5 arrows, and what will be the pattern here, 1 dot 6 arrows. Okay, so how you'll draw here is just simply draw a line, draw circle here, okay, draw circle here, and then you will make 6 arrows. 1 2 3 4 5 and 6. Just color this, highlight this, and then just highlight these things. Okay, highlight these 6 arrows. That is it. And next, what is there? Next pattern is circles. Okay, if you see in first box there are only 1 circle, in the second box there are only 2 circles, third box there are 3 circles, fourth box we have 4 circles, fifth box we have 5 circles, and in the last box how many circles will be there? Simply 6 circles. That is it. Okay, so this was your question number 1. Now question number 2. Let's move on to our question number 2. Very simple question chapters. Children just need to identify the pattern, and then you need to solve the answer. Okay, so here also very simple. You see, you just need to solve this thing, the box. You have to find the numbers which you will put it in the box. That is it. Okay, you don't need to do any addition, any subtraction over here, just need to see the pattern. So pattern is 1 plus 2 is equals to 3, then 1 plus 2 plus 4 is equals to 7, then 1 plus 2 plus 4 plus 6 is equals to 13, then 1 plus 2 plus 4 plus 6 plus 8 is equals to 21. ओके, तो ये क्वेश्चन तो आपको दिया हुआ है, तो आपको ये देखना नहीं है कि 21 आ रहा है, 13 आ रहा है, 7 आ रहा है ऐड करने से. नो, नथिंग लाइक दैट. जस्ट आइडेंटिफाई द पैटर्न. यू सी देर आर ऑलमोस्ट 1 हियर, 1 इज़ फॉलोइंग बाय 1, सो आप यहाँ पे भी 1 लिख दो. नेक्स्ट यू सी 2 को प्लस किया जा रहा है, तो 2 के कॉलम में नीचे 2 लिख दो. इस कॉलम में आप देखो 4 को प्लस किया जा रहा है, 4 दिख रहा है, 3 टाइम्स प्लस किया, 4 को लिख दो. इस कॉलम में आप देख सकते हो 6 को 2 बार प्लस किया है, 6 के नीचे 6 लिख दो. यहाँ पे 8 को प्लस किया गया है, तो 8 के नीचे 8 लिख दो. ओके, सो नाउ नेक्स्ट व्हाट यू हैव इज यू हैव 31 एंड यू हैव गॉट ऑल दीज आंसर्स, बट व्हाट विल कम इन दिस कॉलम. 21 के नीचे जो कॉलम है वो उधर क्या भरोगे. तो नाउ योर चिल्ड्रंस यू सिंपली नो द आंसर. For example, I told you that in first column you will write 1. ठीक है,
1, and in the second column I told you to write 2, and then in the third column I told you to write 4, है ना, and in the next column I told you to write 6, and in the next column I told you to write 8. Next column, we don't know what is the answer, but we know that when you add all these numbers, you will get 31. So just see over here. Okay, first one was, if you just plus 1 plus 2, 3 hota hai. 3 plus 4, how much is it, children? 7. 7 plus 6, it will be 13. 7 plus 6 will be 13. 13 plus 8. 13 plus 8 will be 21. 13 प्लस 8 विल बी 21. तो अभी आपको पता है 21 हो रहा है, बट टोटल यहाँ पे कितना है? 31 आना चाहिए आंसर. आंसर कितना आना चाहिए? 31. इन सबको ऐड कर रहे हो जो नंबर्स हैं, यू गेट 21 एंड द आंसर इज 31. सो व्हाट विल कम इन दिस कॉलम जस्ट माइनस 31 आंसर आना चाहिए. बाकी नंबर्स को जब आप प्लस करते हो, जब इन नंबर्स को प्लस कर रहे हो तो कितना आ रहा है? 21. तो व्हाट यू विल डू हियर, यू विल जस्ट माइनस 21. 31 minus 21, what is it? 0. 3 minus 2, 1. 10. You got the answer now, 10. And this is what you have to write over here in this column, 10. So what will come here is 10. Okay children, I'm explaining again. 1 आप देख सकते हो, 1 कंटिन्यूसली फॉलो हो रहा है. 1 प्लस हो रहा है तो 1 के नीचे वाले बॉक्स में 1 आएगा, या 2 के नीचे बॉक्स में 2 आएगा. यहाँ पे 4 को 3 टाइम्स प्लस किया तो 4 आएगा. यहाँ पे 2 बार 6 को प्लस किया, यहाँ पे 6 आएगा. यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 आएगा. इफ़ यू ऐड ऑल दीज नंबर्स यू गेट द आंसर 21. हियर द आंसर शुड बी 31. सो 21 प्लस क्या करोगे कि 31 आएगा? 21 प्लस 10 व्हेन यू विल डू, यू विल गेट द आंसर 31. Okay, so question number 2 is done. And question number 3 now. Observe the pattern carefully and write the next 2 steps. Okay, again the whole chapter is about pattern, identifying the patterns. So here the pattern is 1 into 1 is equals to 1. 2 into 2 is equals to 1 plus 2 plus 1. Okay, 3 into 3 is equals to 1 plus 2 plus 3 plus 2 plus 1. 4 into 4 is equals to 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको पैटर्न दिख रहा है बच्चों, आई लेट यू नो दैट 1 1 सा कितना होता है? 1 होता है. एंड यहाँ पे 1 लिख दिया. 2 2 से कितना होता है बच्चों? 2 2 सा इज 4. एंड यहाँ पे आप देखो 1 प्लस 2 करते हो 3 आता है, 3 प्लस 1 करोगे तो 4 आएगा, है ना. 1 प्लस 2 will be 3, 3 plus 1 will be 4. तो 2 2 ज़ा भी 4 होता है, 1 plus 2 plus 1 भी 4 होता है ना. 3 3 ज़ा is 9. If you plus these numbers, the answer will be 9. See, 1 plus 2 3 हो गया, 3 plus 3 6 हो गया, 6 plus 2 8 हो गया, 8 plus 1 9. 3 3 ज़ा 9, इनको ऐड करते हो तो भी 9. So how this pattern is, I'll help you identify it. If you see 2 2 ज़ा, तो उन्होंने प्लस कितने टाइम किया है? 1 प्लस 2 तक प्लस किया है, एंड देन रिवर्स प्लस किया है, रिवर्स एडिशन. 2 के बाद क्या आता है? 1, तो 2 plus 1. आई विल एक्सप्लेन इन थर्ड नंबर. 3 टाइम्स है यहाँ पे, तो 1 plus 2 plus 3 किया है. 3 तक ही है ना, यहाँ पे 3 नंबर है, तो 1 plus 2 plus 3 किया है, देन रिवर्स एडिशन. 3 के बाद 3 के पहले क्या आता है? 2. 3 plus 2 plus 1. Okay, I hope you are able to understand. I'll tell you about the 4. 4 also you can see you have to add till 4. 1 plus 2 plus 3 plus 4. 4 हो गया, 4 के बाद रुक जाओगे, फिर रिवर्स एडिशन करोगे. 4 के बाद क्या करोगे? 4 plus 3 plus 2 plus 1. Okay, I'll help you here. I think that way you can understand easily. Okay, what I was telling was about the fourth one. Okay, fourth one only I'll explain. 4 into 4. Okay, 4 into 4, what you need to do is what you will do, 1 plus 2 plus 3 plus 4. सिर्फ 4 तक करना है, बिकॉज यहाँ पे 4 नंबर के बारे में बात कर रहे हैं. तो 1 plus 2 plus 3 plus 4, एंड देन आप कंटिन्यू करोगे रिवर्स एडिशन. 4 के बाद लिखोगे plus 3 plus 2 plus 1. ठीक है, नाउ इफ यू सी 4 plus 4 is 16, है ना. अब आप इसको एडिशन करो. 1 plus 2 is 3, 3 plus 3 is 6, 6 plus 4 is 10, 10 plus 3 is 13, 13 plus 2 is 15, 15 plus 1 is 16, है ना. तो आप जब इसको ऐड करते हो, 4 into 4 is 16, एंड व्हेन यू ऐड दीज नंबर्स ऑल्सो
you will get the answer what? 16. Okay, so that is how you need to find it, solve it out, see the pattern and solve. Next is 5. 5 also I'll explain like this. 5 into 5, what you need to do is, what will come is 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. 5 तक रुक जाओगे बिकॉज 5 तक ही क्वेश्चन में है. उसके बाद रिवर्स एडिशन, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1. Okay, now what is the next number, children? Next number is 6. Okay, the question which you need to do for 6. So here it will be is 6 into 6. ठीक है, 6 into 6 is equals to, आप फिर लिखोगे 1 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 प्लस 6 तक रुक जाओगे. ठीक है, एंड देन रिवर्स एडिशन करना है. 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1. Okay, you understood how you need to solve the pattern? Okay, next question if we do. Next also one more column is there. So 6 के बाद आपका क्या next number आएगा? 7. तो 7 into 7 now. 7 into 7 is equals to 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7. And then reverse addition. Reverse addition मतलब 7 plus 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. Okay, that is how you need to solve the pattern. Next question is question number 4. Okay, the way I showed you here, no children, there were 6 into 6. This you have to write here in this first box, and then which I showed you here, 7th part, this you have to solve it. This you have to solve it over here. Okay, children. So next is complete the following pattern. Again we have pattern. Okay, I told you सिर्फ patterns देखना है. अलग अलग टाइप के patterns होंगे, numbers होंगे, alphabets होंगे, diagrams होंगे, lines होंगे, shapes होंगे, angles होंगे. आपको identify करना है और आगे के question solve करने हैं. So here A part, if you see, I'll explain you in this way only because it is much easier, because if I solve it in front of you, you will understand it better. Okay, so if you see, open the workbook in front of you, then only you will understand. Okay, the diagram in A is, we have a box. Okay, we have a box. How many boxes we have? 5 boxes we have. Okay, 1 2 3 4 5. Okay, we have sorry. Okay, we have 5 boxes. And then what is the pattern which we have is, I'll just change the color of pen. Okay, and we have the diagram is, in first you see, you just have a circle, and in the next diagram you see you have a circle and you have a square in the left hand side. In the third diagram, if you see, you have a circle and then you have 2 squares on left and on right. Okay, and next, what is next? These two is the question. You need to identify the pattern and then solve. So next, what will be the pattern? Circle is there in middle in all the 3 diagrams. तो दोनों में circle आ जाएगा. So in the first diagram, what is it? Left में square था, then यहाँ पे left and right में square है. Okay, so this will be the same here. You have left में square है, right में square है. अब यहाँ पे क्या आएगा? लेफ्ट में स्क्वायर आ जाएगा इस फिगर में, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? राइट में स्क्वायर आ जाएगा. ओके, you understood, children? In the first diagram, in the first you have only one circle. Okay, and in the second you had a circle. I made a really bad square. I know I made a really bad square. This was your square, a circle,
and then we had a square over here. Okay, so yes, so we had a circle and we had a square, and in the we had a square on the left hand side. Okay, so then again we made a square, and then we made a circle in between, and then left make square tha, right make square hai. This was the question, which you need to find it out. So you again made a square, circle will be there in both the figures. We already have two squares over here. We'll start with left side here in this figure, and then we'll finish with the right square in this figure. Okay, so this was the question number 4. Next question, same question, B part is, okay, B part is this figure. I'll just show you few, as I can't draw hole here. Okay, so like this we have, okay, and then we have like this. Okay, and then what is it? Okay, then we have, okay, like this, and then we have a figure like this. Okay, we have a figure like this, and these are colored. Okay, these are colored, this is colored, this is colored. Okay, I'm just draw and in the last diagram, last two boxes are emptied for you. Okay, I've already drawn, but last two boxes are emptied for you. So what we will do here, plain boxes are there. What we need to do here is, first we will draw the lines. Draw the lines like cross. Sorry, change the color. First we will draw the lines. We'll put a cross like this. Here also I'll put a cross, and what we need to do is, we need to draw, we need to fill the corners, fill the corner side, corner angle. Okay, like this. This is the pattern in B part. Okay, just a cross, and then you just draw, just fill the shape of the corner. That is it. That was question number 4. Question number 5 now. Question number 5 is again, complete the following patterns, and you see the patterns. I'll just rub it. Yes, you see the pattern now. In A, you see a circle is there, and then a square is there. Okay, and then we have two circles, and then we have two circles. One circle, one square was there. Next we have two circles, two squares. ठीक है, नेक्स्ट व्हाट विल कम, यहाँ पे वन सर्कल है. अब आप यहाँ पे पैटर्न देखो, यहाँ पे वन सर्कल था, यहाँ पे वन स्क्वायर था, यहाँ पे टू सर्कल्स, टू स्क्वायर्स, है ना. वन टू सर्कल्स, वन टू स्क्वायर्स. अब आपको ब्लैंक में क्वेश्चन में दिया है 3 ब्लैंक्स. आप क्या करोगे, वन सर्कल था, टू सर्कल है. पैटर्न, व्हाट इज द पैटर्न हियर, about circle and the square, but यहाँ पे 3 blanks ही है. So what you will do here is, you will draw 3 circles. ठीक है, you will draw here 3 circles. ठीक है, एंड अगर इसके आगे और भी ब्लैंक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल और भी 3 ब्लैंक्स होते, तो आप यहाँ पे क्या ड्रॉ करते, 3 सर्कल के बाद 3 स्क्वायर. ओके, you see you understand the pattern here. I'll explain in your workbook. 1 circle, 1 square, 2 circle, 2 square, 3 circle. Khatam, pattern is over. Next in B, next is B. You see here in B is, we have circles. हर जगह circles ही हैं. One. Or everywhere there's a circle itself. So you will, in the 3 blanks also, you will draw circle, plain circle. And then if you see lines है, एक straight line है, one line is there in this circle, 2 lines are there in this circle. अब यहाँ पे 2 हैं जो standing lines है, and 2 क्या है, slanting lines, sleeping lines. So 1 line here, 2 lines here. यहाँ पे 3 slanting line, 4 slanting line, sleeping lines. And then यहाँ पे आएगा आपके 5, okay, 5 straight line, 6 straight line. And then यहाँ पे 7 sleeping line, 8 sleeping line. Okay, I hope you understood. Even if you don't, I'll help you out here. Okay, if you see the pattern, children, you just need to identify that we have a circle, and then we have straight एक line है, फिर से दूसरा circle है, 2 straight line है,
फिर जो सर्कल है उनमें स्लीपिंग लाइन बनी हुई है, जैसे ऐसे, ठीक है। यहाँ बट 3 लाइन्स है यहाँ पे बीच में। यहाँ पे क्या होंगे, फिर से 1 2 3 4 लाइन्स होंगे। नेक्स्ट जो आपके सर्कल्स हैं उसमें आप क्या करोगे, यू हैव अ सर्कल, राइट। अब यहाँ पे 4 लाइन्स, नेक्स्ट सर्कल था, वहाँ पे आपके 5 लाइन्स स्ट्रेट थे, 3 4 5 लाइन्स थे। एंड आई डोंट हैव मच स्पेस हियर, I'll use another slide. I'll draw one circle here. Okay, next circle के यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 6 लाइन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 लाइन्स आप ड्रॉ करोगे। एंड नेक्स्ट दो स्ट्रेट आपको बनाने हैं, दो स्लीपिंग लाइन्स, दो सर्कल्स में आपको स्ट्रेट ड्रॉ करने हैं। एंड दो सर्कल देखो यहाँ पे दो स्ट्रेट है, दो सर्कल्स में स्लीपिंग है, दो स्ट्रेट बना दिया। अब नेक्स्ट क्या करोगे, आप स्लीपिंग लाइन बनाओगे। सो फिर आपका नेक्स्ट आपका फिगर क्या बनेगा, लास्ट फिगर विल बी अ सर्कल एंड देन स्लैंटिंग लाइन्स, 8 स्लैंटिंग लाइन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 स्लैंटिंग लाइन स्लीपिंग लाइन बनाओगे आप। नेक्स्ट इज सी पार्ट इज अगेन सर्कल्स आर देयर, तो आप फिर से सर्कल्स बना दोगे, ठीक है। फिर एंडिंग में सर्कल्स बना दोगे। And in the if you see the pattern here, you just need to see the lines which is there inside the circle. For example, we have a plain circle, then we had a circle and one line, then we had a circle and we had 2 lines, and then we had a circle and we had 3 lines, 1 2 and 3, and then we will draw a circle and we will draw 4 lines, 1 2 3 4 lines, and then we will draw a circle, we'll draw 5 lines, 1 2 3 4 and 5 lines, and then we will draw a circle, and what we will do here is draw 6 lines, 1 2 3 4 5 6. Okay, so you understood this pattern. This was very simple. Okay, I'll just rub it. And the next is sixth one we have boxes, 1 2 3 4. We have 4 boxes, and in the 4 boxes we have one line and a dot, and this line is slanting now and we have 2 dots, and then this line is sleeping now and we have 3 dots, and after this we need to draw a line which will be like this, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे सीधी लाइन थी, फिर यहाँ पे टेढ़ी हो गई, फिर यहाँ पे सो गई, फिर यहाँ पे ये लाइन ऐसी चली जाएगी, and then you will draw here is 4 dots, 1 2 3 4 circles. This is the pattern over here. And next is last question for this video will be complete the following number patterns. Okay, so complete the following number patterns is also very simple. Okay, so first pattern is, now this pattern is about the numbers, ठीक है। तो यहाँ पे आपको identify करना है। I'll just write 1 2 1 2 4 7 11, and then we have 3 blanks, ठीक है। तो so now you need to see 1 के बाद 2 आया, 1 के बाद 2 आया मतलब 1 + 1 किया यहाँ पे, 2 के बाद 4 आया तो 2 प्लस कितना करोगे तो 4 आएगा, 2 + 2 करोगे तो 4 आएगा, 4 के बाद 7 है, 4 के बाद कितना प्लस करोगे तो 7 आएगा, 3, 4 + 3 करोगे तो 7 आएगा, 7 के बाद 11 आए, 7 प्लस कितना करोगे कि 11 आएगा, 7 + 4। इफ़ यू सी हर नंबर के बीच में 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स का पैटर्न यूज़ किया गया है, ठीक है। तो अब 4 है यहाँ पे, तो 11 के बाद नंबर कौन सा आएगा, जब हम 11 में 5 ऐड करेंगे, तो 11 में जब 5 ऐड करोगे व्हाट विल यू गेट इज 16। नाउ आफ्टर 5 व्हाट यू विल ऐड हियर इज 6, 16 + 6 व्हेन यू विल डू, यू विल गेट हियर 22। नाउ 6 के बाद कौन सा नंबर ऐड करोगे आप, 7, 22 में इफ़ यू ऐड 7 यू विल गेट द आंसर 29। Understood children?
1 2 4 7 11 इज द पैटर्न गिवन टू यू. अब आपको देखना है 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 नहीं यूज़ किया उन्होंने, डायरेक्ट 4 यूज़ किया है. 4 के बाद 5 और 6 नहीं यूज़ किया, डायरेक्ट 7 यूज़ किया है ना. देर आर मिसिंग नंबर्स हियर इन बिटवीन. सो हाउ यू विल फाइंड आउट द पैटर्न, यू जस्ट नीड टू सी 1 के बाद 2 है तो 1 एंड 2 के बीच में 1 का डिफरेंस है ना, तो 1 आपने यहाँ पे लिख दिया. 2 एंड 4 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है. 4 एंड 7 के बीच में 3 का डिफरेंस है. 7 एंड 11 के बीच में 4 का डिफरेंस है. अब इधर तक आप पहुँचते पहुँचते ही आपको पैटर्न समझ आ जाएगा. ठीक है, तो 1 2 3 4 ऐसे नंबर वाइज वो क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं नंबर को. तो 4 के बाद आप कितने नंबर्स ऐड करोगे, 5 6 एंड 7, एंड सिर्फ 9 नंबर्स में आपको आंसर्स प्लस करने हैं. ओके, दिस वॉज ए पार्ट. ओके, एंड द बी पार्ट विल बी, okay, b1 is 11 comma 2 1 2 1 comma 1 3 3 1, and then we have 3 blanks. ठीक है, we have 3 blanks. so यहाँ पे आप देखो 1 and 1 है, इधर पे 1 2 1 है, यहाँ पे 1 3 3 1 है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 and 1 स्टार्टिंग एंड एंडिंग 1 हर जगह है. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी स्टार्टिंग में 1 है, एंडिंग में भी 1 है, यहाँ पे भी स्टार्टिंग में भी 1 है, एंडिंग में भी 1 है. तो आपको ये तो पता चल गया कि यहाँ पे एंड स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी 1 आना है. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखना बीच में यहाँ पे 1 टाइम 2 है, यहाँ पे 2 टाइम्स 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 टाइम्स 4 आएगा. नेक्स्ट नंबर इज 4 है ना. यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे देखो 2 टाइम्स 3 है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स 4 आएगा. अगेन पैटर्न क्या बनता है, कॉमा 1 and 1 तो होगा ही है ना, 1 and 1 तो होगा ही. स्टार्टिंग एंड एंडिंग 1 विल बी देयर, बीच के नंबर्स आपको फाइंड करने हैं. 2 टाइम्स 3 3 टाइम्स 4, अब यहाँ पे आएगा 4 टाइम्स 5 1 2 3 4 4 टाइम्स 5, पुट अ कॉमा. वी नो फर्स्ट डिजिट इज़ 1, लास्ट डिजिट इज़ 1. अब यहाँ पे 4 टाइम्स 5 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 टाइम्स 6. ठीक है, 5 टाइम्स 6 1 2 3 4 5 5 times 6 and 1. Understood the pattern here, children? 1 and 1 was there, first number 1 was there, second number 1 is there. 2 here we used for 1 time only, 3 we used for 2 times, 4 we will use for 3 times, 5 we will use for 4 times, 6 we will use for 5 times. ठीक है, तो यहाँ पे था आपका 2 1 टाइम था, 3 2 times, 4 3 times, 5 4 times, 6 5 times. ठीक है, so that is how you need to find out the patterns. The next one is C. C के numbers हैं 2000, and then we have 1000, and then we have 500, and then we have 3 blanks. ठीक है, what will come in these blanks? What will come in these blanks? If you see यहाँ पे 2000 है, 2000 का हाफ होता है 1000, 1000 का हाफ होता है 1000 का हाफ होता है 500, 500 का हाफ क्या होता है, 500 का हाफ होता है 250. Okay, if you don't know how to find out the half, you can just solve it like this. Like 2000 था तो 2000 हाफ फाइंड आउट करना है. अगर आपको नहीं पता कितना होता है तो 2000 डिवाइडेड बाई 2 करो. Okay, if you divide 2000 by 2, you will get the answer. So 2 ones are 2. Here 0. How many zeros are left? 3. So 1 2 and 3. Answer is 1000. So here it is 1000. Now 1000 का half आपको find out करना है, तो what you will do? Again the same method. 2 divided by 1000. 2 divided by 1000. 2 5s are 10. है ना? Reminder is 0. How many zeros are left here? 2 zeros. You'll write here 500 is the answer. तो next if you see we have 500. 500 का half find out करना है अभी. तो 500 के half के लिए what you will do? Again 500 divided by 2. See 2 500. And how you will do? 2 2s are 4. Reminder 1. The 0 comes below. 2 5s are 10. 10 minus 10 is 0. 1 0 is left here. So 1 0 will be add up here. तो नेक्स्ट इज 250, एंड 250 का हाफ क्या होता है? अगेन सेम मेथड चिल्ड्रन.
250, what you will do, 250 divided by 2. Okay, see, 250 divided by 2. 2 ones are 2, 0, 5 here, 2 twos are 4, 5 minus 4, 1, and this 0 will come here, 10 हो गया यहाँ पे, and I'll just write here 5 minus 4 and then 0 here, 2 5s are 10. Okay, 125 is the answer. So 125 इधर आ गया आपका, in this blank 125, 125. Okay, now 125 का half कितना होता है? Again same method, 125 divided by 2 you will do, you will get the answer 62.5. Okay, I'll just show you if you want. Two divided by 1, 2, 5. 2 6 are 12. 0 will come. This 5 will come here. 2 2s are 4. 5 minus 4 is 1. And 1 I'll just write here. I don't have space there. Now 1 is the remainder. What you will do, you will put up decimal here, point here, and a 0 will be added here. So what will be the answer? 2 5s are 10. And if you minus, you will get 0. Answer is 62.5. So what is the answer? 62.5. Okay, next is the last question of the day is D1. I'm not giving this for homework because I'm giving you other patterns to do for your homework. So that is why I'm solving the answers all. So D1 is, if you see, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Okay, and next is 3 blanks empty. So if you see here, if you see what is the pattern over here, children's, 1 का 2 times is 2. 1 2 I'll just change the color. हाँ, 1 का 2 times होता है 2, 2 का 2 times होता है 4, है ना, into 2 हो रहा है हर जगह, into 2 हो रहा है यहाँ पे भी, into 2 हो रहा है यहाँ पे भी. जैसे 1 का 2 times, 1 2s are 2, 2 2s are, next is 4, 4 2s are 8, 8 into 2 16, 16 to 32. तो 32 का 2 times कितना होता है? You just need to find it out. अब 32 का टेबल आपको नहीं पता होगा डेफिनेटली. सो व्हाट यू जस्ट नीड टू डू इज यू जस्ट मल्टीप्लाई 32 into 2. What you will get here, 2 2s are 4, 3 2s are 6. Okay, so what will come in this first blank is 64, and then 64 का 2 times you need to do again. Okay, again what you need to do is 64 into 2, 4 2s are 8, 6 2s are 12, 128 is the answer. So here it will come 128. Again one more blank is there, 128 ka 2 times, 128 2 times, 128 into 2 you will do, 8 2s are 16, 2 2s are carry 1 5, 1 2s are 2, 256 is the answer. So in this column 256 will come. Okay, so this is how you need to find out. You need to see the question, you need to see the patterns in the given question. जब आपको given pattern समझ में आएगा तो आप blanks भर पाओगे, given pattern नहीं समझ आएगा तो आप नहीं भर पाओगे blanks. So just need to see, 1 है, 2 है, 2 के बाद 4 आए, 2 के बाद 4 आए मतलब 2 के साथ क्या करोगे तो 4 आएगा, 2 में 2 times मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, 4 के बाद 8 आए, 4 में आप क्या करोगे तो 8 आएगा, 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 टाइम्स करोगे 4 को तो 8 आएगा, 8 में भी 2 टाइम्स करोगे तो 16 आएगा. सो जस्ट सी कैसे पॉसिबल हो रहा है, बीच में क्या उन्होंने पैटर्न्स यूज़ किए हैं कि आपका नेक्स्ट नंबर आए. So if you do like that, you will get the answer like this. Okay, so that is all for today, children. So this was all I wanted to tell you. See, I have taught you each and every question from the workbook. Okay, I have showed you how to identify the patterns, how to think, and how to solve the next pattern. So that is all for today. For your homework, I'm giving you this. You have to complete the pattern now. Okay, you see the pattern and you identify which will come in these boxes. And again, this is there. Again, this is also you need to do. Pattern देखना है, next आगे के 2 blanks fill करना है, and then what you need to do is 3 patterns of your own. Okay, खुद से pattern invent करो and इसको fill करो. That is it. That is for your homework. So take care of yourself. See you in next class. Do your homework and send the homework on WhatsApp. Okay, children? Thank you.